Good morning, students. Today we are here with a new topic, that is MONERA. MONERA means a group of organisms, the most primitive one, जो इस धरती पर माने जाते हैं कि सबसे पहले बने होंगे। तो उस ग्रुप के बारे में, उसके ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मोनेरा ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? दे आर prokaryotic organisms. Prokaryotic, that is made up of two words. Pro means before and karyo means nucleus. Means those organisms which don't have a well defined nucleus. तो न्यूक्लियस पूरी तरह बनने से पहले उसके चारों ओर की मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट वाज अब्सेंट। तो उस टाइम पे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे, जिन ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए आरएनए है, उसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। तो वहां पे जो डीएनए है वो ऐसे ही बीच में साइटोप्लाज्म में पड़ा होगा, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो मोनेरा में हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म lack a true nucleus. So monera are the prokaryotic organisms that lack a true nucleus. जिनमें वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब उनके चारों ओर की, न्यूक्लियस के चारों ओर की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज एब्सेंट। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम मोनेरा कहते हैं। जो मोनेरा ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर फाउंड एवरीवेयर। वो आपको हर जगह पे मिल सकते हैं जहां पे भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। सो मोनेरल्स दे आर फाउंड एवरीवेयर वेयर द लाइफ कैन बी प्रेजेंट। So, the monomer group, they are generally classified into two types of organisms. Monerals में mainly जो है वो बैक्टीरियाज आते हैं, and they are classified into two major groups. That is the first one, eubacteria. And the second one is archaeobacteria. In eubacteria, there are the two kinds of bacteria are present. First, that is grouped as bacteria, and the another one is grouped as cyanobacteria. Now we will study about this group, that is bacteria. Bacteria, the most primitive one, in which there is a normal organism having cell wall, but nucleus is not well defined. That means it is prokaryotic. These are generally microscopic organisms and unicellular. इन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं और ये एक सेल के बने हुए हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स दैट इज मेड अप ऑफ वन सेल। So bacteria,
They are prokaryotic microscopic unicellular organism. फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया को देखा गया वो देखा एवी ल्यूवेनहॉक ने. एवी ल्यूवेनहॉक ने 1675 में इन 1675 उन्होंने क्या किया, अपने दांत में से टिथ में से कुछ इनेमल जो है उसको स्क्रैप करके बाहर निकाला. एंड दे ऑब्जर्व्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप. व्हाट दे ऑब्जर्व? दे ऑब्जर्व सम मूविंग पार्टिकल्स, सम मूविंग एनिमल्स. दैट इज व्हाई he called them as small animals, means animalcules. He scrapped from his teeth and observed some little animals. Why he called animals? Because they were moving. So they called them little animals, means animalcules. Later on, these animalcules were named as bacteria. After some time, they were named as bacteria by Ehrenberg. Ehrenberg ने इन लिटिल एनिमलक्यूल्स को नाम दिया, Ehrenberg ने बैक्टीरिया, in 1838. So the bacteria which were identified by Leeuwenhoek, they were named as bacteria in 1838 by Ehrenberg. Ehrenberg ने उसका नाम दिया. Now we will see the general characters of bacteria. First of all, you have seen they are unicellular organisms. एक ही सेल के बने हुए हैं, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देंगे. एंड दे आर प्रोकैरियोटिक, उनका कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. इसके अलावा उनमें और जनरल फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि देयर सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. जनरली जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में, जैसे तो उनमें पूछा जाता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो है साइड किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, या फिर द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ विच केमिकल. सो दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन. बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, और उस पे एक कवरिंग भी हो सकती है. इट कैन हैव a capsule-like covering or slime layer covering. So this is about the cell wall of the bacteria. Now about their size. Generally, the bacterial size that range from 1 micrometer to 10 micrometer. This is the average size of bacteria. But
The smallest bacteria that is of 0.1 micrometer. Now, the smallest bacteria that is of 0.1 micrometer. एवरेज साइज 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है, बट जो हमारा सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो है 0.1 माइक्रोमीटर का और जिसका नाम है कोकाई. In the same way, the largest bacteria that can be of 500 micrometer जिसका नाम है बैगेटोआ. Now, the bacterial cell does not show any cytoplasmic streaming. So, the bacterial cell does not show any cytoplasmic streaming. Means उसका साइटोप्लाज्म जो है वो मूव नहीं करता, सर्कुलेटरी मूव नहीं करता. एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया मे हैव फ्लैजिला. कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला मिलता है फॉर इट्स मूवमेंट. नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज द राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. राइबोसोम जो है दैट इज ऑफ 70 एस्टर. So the ribosomes that is of 70S type. Now we will talk about the nutrition. Nutrition means bacteria जो है वो खाना कैसे लेते हैं या बनाते हैं. So nutrition can be of both type, heterotrophic and autotrophic. Heterotrophic means they take nutrition from the outer environment, from the other living organisms. Autotrophic means they can prepare their own food by chemosynthetic or photosynthetic process. Now, the next is reproduction. Means नए बैक्टीरिया जो है वो कैसे बनते हैं. रिप्रोडक्शन, जो न्यू बैक्टीरिया हैं, जनरली रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल और सेक्सुअल, बट इन द बैक्टीरिया देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस. सो रिप्रोडक्शन अकर बाय अ सेक्सुअल मीन्स, दैट इज बाइनरी फिशन. Binary fission means that one bacteria get divided into two bacteria. So this is the mode of reproduction in bacteria. Now their availability, as we know, they are present every
everywhere, and that term is known as omnipresent. So they are present in soil, in water, in different kind of living organisms or outside the living organisms. So these organisms, these bacteria, they are omnipresent. Means present everywhere, like soil, water, air, inside organisms or outside organisms. So they are present everywhere. Now, based on the temperature, कि वो कितने टेम्परेचर पे प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके बेस पे हम बैक्टीरिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, which can live in less than 20 degree Celsius or which can live in range of 20 to 45 degree Celsius or which can live at the higher temperature of the 45 degree Celsius. So the first group, that is cycrophiles. Cycrophiles means they can live at the temperature less than 20 degrees Celsius. The bacteria which are present at less than 20 degree Celsius temperature, they are known as cycrophiles. जो 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे रह सकते हैं, और जो बैक्टीरिया 20 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में रहेंगे, they are called mesophiles. While those bacteria which can stay at the higher temperature, even at higher than the 45 degree Celsius, they are called thermophiles. So on the basis of temperature, the bacteria can be of 3 types. Now, photogenic bacteria means those bacteria which emit light. So they have luminescent property. Means they emit light. Why they emit light? That depend on an enzyme, that is luciferase, because they have luciferase enzyme. That a question can also come in the NEET exam, that why bacteria are luminescent. क्योंकि उसमें luciferase enzyme होता है जो luciferin केमिकल पे एक्ट करता है एंड एमिट लाइट, और लाइट को एमिट करता है. Now the different shapes of bacteria. On the basis of shape, the bacteria can be of different types. Like if they are round shape, if they are thread shape, or if they are some coma shape. Different shapes are there. Like the first one, that is called coccus or cocci. This one is called bacillus, and this one is called vibrio.
हो सकती हैं बैक्टीरिया की, जैसे कि लाइक माइसीलिया, मे बी स्टोम और मे बी बर्ड। So the different shapes are possible for the bacteria, and on the basis of its shape, on the basis of the shape, the different names are given, different classification is given to the bacteria. Now, some economically important bacteria. With different names of the bacteria, we will do that which kind of bacteria that is beneficial in which kind of work. Now, the first one, you have heard about that, lactobacillus. Lactobacillus, that is generally used to make lactic acid or the curd. So, some kind of bacteria that are beneficial in making food. Like one example is lactobacillus. Now, next example is streptococcus. That is used to make butter. Streptococcus lectei. Now, the third example is Acetobacter. Acetobacter, that is used to make vinegar. Now, the Clostridium botulism. That is used to make butyric acid. Next one is Acetobacter pseudomonas. That help in fermentation or rotting of jute fiber. Some bacteria, they are useful in agriculture, different food industries, making medicines, and the different aspects of the life. So, you can see there are some examples which are beneficial for us. So, bacteria, that means which are grouped in monerans, and
They are the prokaryotic organisms present on the earth. Monera group is the only group which have the prokaryotic organisms. So now you can learn what are the general characters of bacteria. Thank you.